मैं एक अपनी पर्सनल कहानी कहूँगी। मैं लखनऊ से हूँ, आईटी कॉलेज की पास आउट हूँ और मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ। मैं एक आईआईटी आईएम टिपिकल जो फैमिली होती है मिडिल क्लास, उस फैमिली से हूँ। मेरे दोनों ब्रदर्स आईआईटी आईएम हैं, तो मेरे पे बहुत प्रेशर था कि तुम भी बनो वैसा कुछ। हाँ, मैं बचपन से पेंट करती थी, ड्रॉ करती थी। आईएम अहमदाबाद के बगल में एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन करके के एक स्कूल था। मेरा बड़ा भाई वहाँ पढ़ता था। वो कहता था वहाँ पे पागल टाइप लोग रहते हैं, इसको मत भेजना वहाँ, ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। बड़ा भाई निकल गया, तब थैंकफुली मैं 12th में थी। छोटे भाई की बारी आई, तब से सिर्फ आईएम अहमदाबाद और आईएम कैलकाटा हुआ करते थे। बैंगलोर एक्सेट्रा काफ़ी बाद में बने हैं। फिर मेरा छोटा भाई निकला, उससे ज़रा मैं ज़्यादा क्लोज थी, तो मैं बोलती थी दादा अब पापा मुझे भी बोलेंगे कि इंजीनियरिंग करो। तो बोलते नहीं, मैं पता करता हूँ क्या कर सकते हैं। तो वो एनआईडी गया, वो देखा, बोला हाँ यार वहाँ तो वाकई में पागल टाइप लोग रहते हैं। फिर वापस आया, बोला तू मेरे साथ चल। और मैं आईएम अहमदाबाद की कैंपस गई, 1 हफ्ते 10 दिन उसके साथ रही और वो मुझे एनआईडी के कैंपस ले गया। जब मैं पहली बार एनआईडी के कैंपस में गई, वहाँ पे मैंने जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे उनसे बात करी, मैंने स्टूडेंट से बात करी, काफ़ी दिन वहाँ पे जिसको बोलते हैं हैंग आउट करती रही। तो मैंने रियलाइज़ किया ये तो बहुत अलग तरह की जगह है, ये शायद वही जगह है जहाँ मैं बिलोंग करना चाहती हूँ। वो क्यों अलग जगह थी मैं आपको ये बताती हूँ। मैं एक क्रिएटिव इंसान थी इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड फैमिली। माई फादर वॉज अ ब्यूरोक्रेट, माई मदर वॉज अ सोशियोलॉजी प्रोफेसर, both my brothers were IIT IIMs. There was no place for a creative mind in my family. A mind who was creative, who wanted to pursue design, film and communication career. There was no place for that. Does the current education system still has a place for that mind? What is our current education system doing? अभी मैंने बेटर इंडिया की न्यूज़ हेडलाइंस में पढ़ा है कि एक लड़का अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अपने गांव में गया, उसने ऑर्गेनिक फार्म खोला और उसने 1 साल के अंदर 3 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया। What is our education system doing for such minds? Are we training? Do we have a structure, a pedagogy? Do we have anything for them? What are we doing for that? We as educators need to look at next generation of learners. These people do not, my son, my daughter, they don't want to do a corporate job and earn money. They are saying नहीं, हमें तुम्हारी तरह 9 to 7 नहीं करना, हमें कुछ अलग करना है. They are not aspiring for a BMW and an Audi or a house with a swimming pool on roads. Who want to do things differently. हमारे ज़माने में वो 10% slot designers होते थे. आजकल वो 10% interesting entrepreneurs होते हैं, वो interesting काम कर रहे होते हैं बच्चे. What are we doing as educators for them? What are we doing those 10% who want to be the next creative people? We are not doing anything for them. We have to have new pedagogical innovation, new kind of courses, not just curriculum, but new kind of total new courses for them. Not an MBA in what? I don't know. An MBA in creating businesses out of new innovative ideas. Not just to become a part of a corporate ladder. No. What are we doing out of that? How many of our kids really want to do a proper job? This is exactly what I keep talking about, that what are you doing for that 10% of a small girl or a small boy? I see myself as that. I keep telling, what are you doing for that next, Dipti Pant or another person who's sitting in a small city, wants to do something different. Where is that curriculum? Where is that course? Where is that structure? I don't want to do an IM or an ID anymore. I want to do something different. I want to go back to my farm and create wealth out of that. I want to pick up a craft sector and make something out of it. See, I want to do something different. I want to create my own kind of wealth. My daughter says I want to backpack the whole world and she's a very good dancer and a singer and a tabla player. And she says, ये तो पढ़ाई तो मैं इसलिए कर रही हूँ just to satisfy you guys. Otherwise I'll play tabla all around the world and I'll travel around the world. So we need to take a deep breath as educators and think, what are we doing for the next generation of people? Do we know our consumers? Do we know our children, what they want to do? Sit down with a cup of coffee with your own child and ask what your child wants to do if your child is between 15 to 24. I'm telling you that because I lead a design and a communication college. I deal with these creative minds day in and day out. And I'm a very hands-on kind of a faculty. I go out, teach with them, run along with them. I stay late
back with them in the workshops, work with them, talk with them, like the way I was taught in a design school. So what are we doing with them? I would just say that. Think about it. And thankfully, this is the last point, because I want you to think about it as you go along. What would education legacy would you like to leave behind for your children, for your grandchildren, for your great-grandchildren? Let's stop making business out of education. Let's start thinking, what kind of knowledge legacy are we going to leave behind for our children? For my children to padh gaye. For my great-grandchildren. And that is why 4 years back I came into knowledge. I came into education. I said, और कोई नहीं तो मैं करूँगी. मुझे कम से कम अपने नाती पोतों की चिंता है. So thank you so much.